Yes. So, Vidya has written, stammer cannot hold one back from doing what they want to do, especially speaking. Okay. Then Nyai has written, it is all about it's all about one's mindset, how we view ourselves. Vishwas Mishra has written, positive approach to every situation necessary to overcome stammering. Ankit Raj, the person to the right is enjoying speech without any fear of stammering, while person on the right is hampered by the thought of stammer, prioritizing thinking about stammering over speaking. All these are very good summaries, huh? या इंद्र आप क्या बोलना चाहते थे? या सर, जैसे जो फर्स्ट पर्सन है, लाइक फर्स्ट आई कैन से ही हैव वेरी पॉजिटिव माइंडसेट, हाँ like जी. he will say I stutter but I can speak. When I come to second, like he is more thinking about the stammering, so that is like negative way of thinking. Yeah, so that was my comment. Okay. Like he is more concerned about the stammering, like I speak but I stutter. Yeah. So this is a lead in to what we want to talk about here a little bit today. We get into this particular mindset, one or the other. This is more reflexive. This is what we do when we have avoidance behavior, when we try to hide our stammer. These are all learned behaviors. ये सब कुछ जो हमने सीखा है, these are all learned behaviors. So this is the more typical response that a lot of us have until we change our mindset. Typically, the mindset that is filled with avoidance and fear is this one. But then this is the different mindset. This is the mindset that we can also develop over time. And I think this renders as what I'm going to show you and what we're going to talk about here today. This notion of it's okay to stammer, right? Stammering में कोई बुराई नहीं है. It is okay to stammer. So if you look at the two columns here, one is what is the accepting stammering mindset. Second one is the more rejecting stammering mindset. Isco in the current language on neurodiversity, we're calling it, this is the rejecting stammering mindset, is the stammer-phobic mindset. This is the more what is called the stammer-hilic mindset, more friendly, less friendly, more friendly. Lekin, what does it mean? When we say it's okay to stammer, what does it mean? So let's chat about that a little bit. And of course, on the other side of the ledger, if you think of this as a ledger, left side, right side, इस साइड की जो लेजर है इसका क्या मतलब है? What does it mean to say it's not okay? So I think it would be useful for us to get a handle, because these things can mean different things for different people. And so what does it mean to you when you hear things like it's okay to stammer or it's not okay to stammer? Let's explore that a little bit. Maybe get into breakouts if you think that's okay, Dr. Sachin. Let's get into some breakouts for about 5 minutes, not very long. 5 minute थोड़ा share करके देखते हैं. अगर आपको इसको reference देखना है, if you want to make a screenshot, go ahead and do that. I can also write these messages in chat. Or people can just take a screenshot. If you share the screen, Yeah. Does everyone know how to take a screenshot? अपनी अपनी डिवाइस में सेल फोन पे भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना? कंप्यूटर पे है तो कंप्यूटर पे भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो उसको आप फिर दोबारा देख पाएंगे, रेफर कर पाएंगे. So Dr. Amit, you can share that matrix. Yeah, I'm going to do that just now. I'm going to just also put this in chat. Let me share it with you.
लोग ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? Okay. Yes. Okay, good. So if you all have this, let's spend about 5 minutes in breakouts and chat about what this means, and be prepared to share out when you get back, and then we'll have a nice conversation about this. There are two parts to this particular ledger. One is, what does it first of all mean? What does it mean to say it's okay to stammer? What does it mean to say it's not okay to stammer? But the second part is also, what choices will a person likely make if they think it is okay? So how does it drive out the choices that we make? Choices that we make about communication and so on and so forth. And what are the choices here? What are the choices over here? And what are the choices over here? Because whatever mindset जो है हमारा, जो हमारी जो mentality है, obviously that's going to drive the behavior. So what is the behavior? Like, what is it? What are some choices we make in the process? Should we do breakouts, Dr. Srivastava? Yes. Okay. So I made 3 rooms, and Mhm. and I and Dr. Amit also will be joining different rooms at different times. And as you have understood, you have to, if you can take notes, it will be good. And you have to answer the question that what does it mean to say that stammering is okay? What do you understand by that? And if that is your meaning, then what kind of actions will you take most likely? Understanding choices and actions, how they interconnect in the context of stammering. मनीष, आपको मैं रूम में डाल रहा हूँ, आप बाकी साथी आपको समझा देंगे कि क्या बातचीत हुई है अभी तक. ठीक है सर जी, थैंक यू. लेट मी. मनीष, आपके पास आ गया होगा रूम नंबर 1. अब यू कैन ज्वाइन रूम नंबर 1. So, Amit, shall we go to, I can go to room number 1, you can go to room number 2. Sure. ठीक है है. ना, थोड़ी देर के लिए. ठीक है, हाँ, let's And do we it. will wind up after 5 minutes. अभी 8:54 हो रहे हैं, तो by ठीक है. 9 or before 9 I'll wind up. ठीक है. ठीक है. Sounds good. Will you keep track of the time? हाँ, I'll do that. ठीक है. I'll do that. Hello. हेलो. Vishwas Mishra is there, I think. Yes. तो विश्वास, आप समझ गए ना कि क्या करना है? डॉक्टर विजय बता देंगे एक बार. मनीष, आप ध्यान से सुनना, डॉक्टर विजय बता रहे हैं कि 5 मिनट में क्या करना है हमें. आपके पास पेपर पेन है मनीष? हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी. एक पेपर पेन ले लीजिए. विश्वास, ठीक है. कैन यू ओपन योर वीडियो? विजय, बताइए मनीष को. हाँ, मनीष जी, हाँ जी. आप सुन पा रहे हो ना? हाँ, बात आवाज. क्योंकि मेरा सेल फोन से मैंने ज्वाइन किया है. आवाज तो ठीक आ रही है ना? आवाज आ हाँ रही जी. है. हाँ, आवाज आ रही है. तो या 2 टाइप की स्टैमरिंग की बात करते हैं तो 2 टाइप के माइंड सेट होते हैं. एक होता है एक्सेप्टिंग टू स्टटरिंग को एक्सेप्ट करना, हकला को एक्सेप्ट करना. सेकंड होता है रिजेक्टिंग द स्टटरिंग. ये 2 टाइप के माइंड सेट है. तो स्टटरिंग को अगर ये एक्सेप्ट करते हैं हम, तो माइंड सेट को बोलते हैं स्टैमर फिलिप. और अब मतलब
स्टटरिंग को रिजेक्ट करने जा रहे हैं, तो वो माइंडसेट होता है स्टैमर फोबिया है स्टटरिंग से। और एक होता है सिली के, मतलब हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो व्हाट डज इट मीन टू से इट्स ओके टू स्टैमर? तो स्टैमर को हम अगर एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो क्या इसका मतलब क्या है? एक्सेप्ट कर रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं? तो हम अगर स्टैमरिंग को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो हमारे पास में क्या क्या चॉइसेस है? तो हमने स्टैमरिंग को एक्सेप्ट किया, मतलब हो गया, फिर ऐसी बात नहीं। तो आगे क्या करना चाहिए? स्टैमरिंग को एक्सेप्ट कर लिया, तो बाद में आगे क्या उसके? ये हो गया एक साइड का। एक उसका लेजर का मतलब राइट साइड हो गया, लेफ्ट साइड हो गया। लेजरिंग का राइट साइड के बारे में बात करेंगे। तो भी पे मतलब स्टैमरिंग को रिजेक्ट कर रहे हैं हम, मतलब हमें है स्टैमरिंग, लेकिन हम उसको मान नहीं रहे हैं कि हमें स्टैमरिंग है। तो हम मान नहीं रहे, लेकिन जिंदगी में तो सब कुछ करना है, बात भी करना है, सब काम भी करने, सब डेली तो करना ही है। तो हमारे पास क्या चॉइसेस थे? हम अगर रिजेक्ट कर रहे हैं उसको, तो हम जिए कैसे? मतलब कैसा नॉर्मल जिंदगी जिए हम? तो आई थिंक ये इसका शॉर्ट समरी है। अच्छा, आपका आवाज नहीं आ रहा है सर। हाँ, हाँ। मनीषा पेपर पे हाँ 2 जी, कॉलम बनाओ। एक कॉलम के ठीक ऊपर है, लिखो स्टैमरिंग इज ओके, ठीक है जी, और दूसरे कॉलम के ऊपर लिख दो स्टैमरिंग इज नॉट ओके। ठीक है जी, अब आप सोचो, दूसरे कॉलम में जहां पे लिखा है स्टैमरिंग इज नॉट ओके, जो आदमी ये बात मानता है वो क्या चीजें कर रहा होगा अपनी जिंदगी में। ठीक है जी, उसका जीवन में क्रियाकलाप किस किस्म के होंगे। और पहले कॉलम में जहां पे जो आदमी मानता है कि स्टैमरिंग इज ओके, नॉट ए बिग डील, उसकी उसकी बातचीत कैसी होगी, उसके काम कैसे होंगे, वो जिंदगी में के फैसले कैसे कर रहा होगा, इसका इसका फर्क निकालना है। तो जैसे मैं एग्जांपल दूं, जो आदमी ये कहता है स्टैमरिंग इज नॉट ओके, वो बॉस के बर्थडे पार्टी में जाकर गाना गाएगा, कुछ बोलेगा, अ, या नहीं करेगा, ये आपको लिखो। अब इस तरह फर्स्ट कॉलम में लिखो कि जो कहता है स्टैमरिंग इज ओके, वो क्या बॉस की पार्टी में जाएगा और बॉस को जन्मदिन की शुभकामनाएं बोल कर देगा। ऐसे उदाहरण लेकर लिखने हैं आपको कि इस कॉलम में ये काम ये आदमी करेगा, वो वाला नहीं करेगा, ये दूसरा काम ये करे, ये तो करेगा मगर वो नहीं करेगा। ऐसे सोचना है गहराई में। इतनी बड़ी हिंट दे दी मैंने। अब और बताइए, सोचिए मनीष, क्या क्या चीजें हैं जो फर्स्ट कॉलम में लिखी जा सकती हैं, सेकंड कॉलम में जो नहीं लिखी जा सकती। मैंने लिखा है घूमने फिरने फैमिली के साथ जाएगा, हाँ, अपने पड़ोसियों के साथ घुल मिलकर रहेगा, हाँ। है ना? कौन 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 से कॉलम में लिखा है? स्टेटस इज स्टैमरिंग इज ओके। अच्छा, और सेकंड कॉलम में क्या क्या चीजें होंगी?
उससे ऑपोजिट होगी। घूमने फिरने हाँ फैमिली के साथ नहीं जाएगा, जाएगा तो हाँ, अकेला ही होगा कभी भी। अकेला जाएगा, ठीक है। और क्या करेगा वो और बंदा, जो और क्या करेगा? पड़ोसियों से कुछ भी काम होगा तो खुद हम्म बात नहीं करेगा, किसी हम्म थर्ड पर्सन की हेल्प लेगा बात करने के लिए, ठीक पूछने के ठीक है, लिए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जहां पर छोटी सी बात है जो सीधे फोन पे हो सकती। Sorry to cut you off, Vidya. We had to come back, but we'll repeat some of these things for the benefit of the group as we go along. Let's do this. I'm going to share screen a little bit and let's write down some of the responses जो receive किए हैं in each column, and let's see if we can flesh things out a little bit. So I'm just going to share the screen, and I'm going to invite each group to share some highlight in one column or the other. So from my group, I will request Manish to share just one idea from his notes. Okay. Manish. जब भी हम घूमने, जब वैन स्टैमरिंग इज ओके, तो जब भी हम घूमने के लिए जाएंगे तो फैमिली के साथ जाएंगे और एंजॉय करेंगे। If we Okay. think we are, if we think that it's okay to stammer, ठीक है। और अपोजिट कॉलम में क्या होगा मनीष? ऑपोजिट कॉलम में होगा कि जब भी हम फैमिली के साथ घूमने का प्लान होगा तो हम कोशिश करेंगे कि नहीं, मैं साथ में नहीं जाना और मैं अपने दोस्तों के साथ ही घूमने फिरने जाऊंगा। बिल्कुल Okay. ठीक है, सही कहा। So यहाँ पे I'm going to say I'm on the right side, more selective about communication opportunities. Let me know अगर मैं ठीक से summarize कर रहा हूँ जो आपने बोला कि left side पे I'm sorry, right side पे, if it's not okay to stammer, then we are likely to be more selective about taking communication opportunities here. We like to be more open about taking communication opportunities. Is that fair? Yeah, I think so. मनीष, अब Okay. सहमत हैं आप? हाँ जी। सेकंड, यदि मुझे अपने पड़ोसियों से बात करनी है, Hmm. पड़ोसियों से मैं घुल मिल कर बात करूंगा, उनसे कुछ लेना है देना है तो करूंगा। Hmm. और यदि Hmm. स्टैब्लिश नोट ओके तो मैं किसी अपने फैमिली मेंबर को बोलूंगा कि मैं नहीं Hmm. जा सकता, Hmm. तो आप उनसे कुछ भी लेना देना है या उनको इनवाइट करना है तो आप Hmm. जा सकते हैं। Okay. Good. Let me summarize it here. Here I might be less avoidant. Here I might be more avoidant. Yes. Now we can go to Also, the हाँ, जब आपने ये भी बोला, I just want to go back to Manish for a second. Less avoidant, more talkative, yes. right? यहाँ पे ज्यादा, जैसे आपने बोला कि पड़ोसियों से बात करनी है तो ज्यादा खुल मिल के बात कर सकेंगे. Here I will talk more. Obviously, this is also correlated. If I'm less avoidant, then I'm also talking a little bit more, maybe, right? And here, because I'm more avoidant, I might also be less talkative. Okay, great. जो दूसरा ब्रेकआउट रूम था जिसमें विद्या, अजेंद्र और न्यायी थे. Any thoughts you want me to kind of summarize here? There were some really interesting thoughts in our group as well. If anybody from the group want to share, they are welcome. There was Ankit Raj also, Vidya was there, Nyai was there. Nyai, do you want to share? Like if someone uh, feels that it's okay to stammer,
he will have more confidence, and also he will love himself or herself more. As yeah, and yeah, that's it. Great. Good point. Yes. Likely to have more confidence. Yeah. And self-love. Mhm. Self-love or compassion, yeah, or self-compassion, yeah. Would it be okay to say here we are less likely to have some confidence and less accepting of ourselves because obviously we're rejecting an important aspect of ourselves? Yeah. You made some interesting points as well. Ankit, do you want to come off the mic and share them again? Same Yeah, invitation. Yeah. sure. Sir. For it's okay to stammer, so that person will not have any inferiority complex, while where it is not okay to stammer, like he or she is likely to have an inferiority complex. Okay. More, yes, more likely. Okay. Regarding choices, so the person for him I, like his attention would be totally drawn upon the thoughts he's trying to convey. Like it would be a conscious choice for everyone, or even a subconscious choice. Mhm. And for the person, like for him, it is not okay to stammer. His consciousness would be driven by avoiding the stammer and not completely like on the thoughts he's trying to convey. Okay. So maybe here the person is more focused on the content Yes. of the communication, less focused on themselves. Maybe at best equally focused on the content and on themselves, right? Because you can't get away from being focused on the content. Although obviously that is going to happen. We all talk to make meaning. We all have some content we want to communicate. So the content is going to be there, but the attention is likely to be more split in this situation, right? Yes. Attention split. Okay. I could say this another way is that I'm just saying what comes handy right now. Where do you think I'm more likely to advocate for myself? If I think it's okay to stammer or when I think it's not okay to stammer. Yeah. अपनी It's okay वकालत to जो है stammer. अपनी वकालत किस जगह पे मैं likely ज्यादा करूंगा? Not okay from my end. Okay to stammer. Okay. So I'm more likely to advocate over here. Yes. More likely to self-advocate, let's just say that. I think Gajendra and Vidya are saying two different things. Gajendra, Yeah. will you repeat? Will you repeat? Yeah. Yeah. Really, I Yeah. didn't hear that. Right. Sorry. Rightly said. My point is different. Like if I Uh-huh. stammer, so I always try to prove that what I am doing to avoid situation, I am correct. No. The question is, who is more likely to do self-advocacy? If you believe that sorry. stammering is okay, or if you believe stammering is not okay. Okay, so then it is like what Vidya said. It's true.
Okay, fine. More likely to self-advocate here, less likely to self-advocate here. Where am I more likely to voluntarily stammer? On the left or on the right? On the left column or on the right column? Left one. Left. Left column. Okay. I'm going to broaden this up a little bit. More likely to voluntarily stammer or experiment with speech, right? Because when we are talking about voluntarily stammering, we're talking about doing something different with speech. As I'm doing some voluntary stammering with you, अभी अब मैं आपके साथ में थोड़ी सी नकली हकलाहट कर रहा हूँ. फ्रीक्वेंट लाइट वॉलंटरी स्टैमरिंग में कर रहा हूँ आपके साथ फुल आई कांटेक्ट के साथ. ये ज्यादा लाइकली है अगर मेरी मेंटालिटी है कि स्टैमरिंग एक कुदरती चीज है. और कुदरती चीज ऐसी है कि ठीक है, लोगों की बनावट जो है अलग अलग लिहाज से हुई हुई है. किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को और कोई प्रॉब्लम है, किसी को मैथ की प्रॉब्लम है, किसी को हियरिंग प्रॉब्लम है, किसी को आंख की प्रॉब्लम है. हमें स्पीच में कभी कभी प्रॉब्लम होती है, ठीक है. ये कुदरती चीज है. और अगर ये कुदरती चीज है तो इसके साथ हम थोड़ा सा स्ट्रगल कम करने के लिए, अपना एक्सपीरियंस अच्छा करने के लिए, कम्युनिकेशन को डेवलप करने के लिए स्ट्रगल कम कर सकते हैं वॉलंटरी स्टैमरिंग सीख के. ये सब कुछ जो है ये थोड़ा आसान हो जाएगा अगर हम छुपाने के बिजनेस में नहीं लगे रहते हैं. अगर हम छुपाने के बिजनेस में लगे रहेंगे तो ये सब कुछ हमें करना, इस उसकी जो ये सब करने की जो हमारी जो क्षमता है वो कम हो जाएगी, क्योंकि हमारा जो माइंडसेट है वो दूसरी ओर जा रहा है. ओके. More likely to voluntarily stammer, experiment with speech, less likely to voluntarily stammer, experiment with speech. Where am I more likely to self-disclose? किस जगह पे मैं Left. ज्यादा likely है कि लेफ्ट पे? ओके. Yeah, left. Okay. Yeah, so that's also fairly obvious. So here we are more likely to self-disclose. Less likely to self-disclose. So the basic point, I mean, we can keep adding to the list, but I also want to wrap up a few things. Yeah, what were you going to say, Dr. Srivastava? You're on mute. I just want to ask one more question from our participants. Sure. Who is more likely to practice techniques, the left group or the right group? Left. Left. And my last question, but funny question. And who is more likely to join Zoom sessions in TOPG? Left or right? Left. Left, of course. So now I think you have understood that whatever is holding you back from making more videos is the mindset on the right hand. Right hand side is the one which says stammering is not okay and God should intervene. Why am I having to make all these videos? But if you can accept that, okay, stammering is okay, and I can try a little technique so that I can speak more easily and I can be understood by others, then you'll be doing more practice. I mean, the mindset is very different in both the cases. Back to Dr. Amit. Thank you. Yeah, thank you for saying that. I think that's very important. The idea of change, right? So all of this stuff, jo hai, let's just take a look at this list for a second. All of the changes in life that we want to make are here on the left. We want to be able to learn to self-advocate. अपनी वकालत थोड़ी कैसे करनी है उसको सीखना चाहते हैं. हम कम अवॉइड करना चाहते हैं क्योंकि अवॉइडेंस ठीक नहीं लगती, अच्छा नहीं लगता.
हमें अपॉर्चुनिटी नहीं लेते, हम ज्यादा बात करना चाहते हैं, खुल के बात करना चाहते हैं, इतना अवॉइडेंट नहीं होना चाहते, इतना सिलेक्टिव नहीं होना चाहते हैं, हम किसी के साथ बात कर रहे हैं, नहीं बात कर रहे हैं. We are more likely to experiment with speech over here, less likely to experiment with speech, more likely to reveal, more likely to conceal over here, more likely to reveal in one side, more likely to conceal on one side, more likely to join self-help organization, less likely to join self-help organization. I would even say that if you're seek speech therapy, if we are seeking speech therapy, we are actually more likely to seek the kind of speech therapy that is holistic, that is broader, that gets not only at our speech but our overall experience. Speech therapy comes in many forms, many stripes, many shapes. एक टाइप की स्पीच थेरेपी है जो कि entirely speech focused है. And that is the goal for that, which because it is aligned with the medical model. That goal is to eliminate the stammer or to substantially reduce the stammer. The other kind of speech therapy, which has some elements of speech adaptation, motor adaptation, थोड़ा change करना, struggle कम हो, forward movement ज़्यादा हो, संघर्ष कम हो. But there is also a much bigger component in that kind of speech therapy, because that is about looking at avoidance behavior, changing avoidance behavior, voluntary stammering, self-disclosure. It's much more holistic, much more well-rounded. A person who thinks it's okay to stammer is more likely to be open to that kind of speech therapy, versus even the kind of speech therapy that one will seek if one thinks that stammering is not acceptable is going to be much more limited, much more niche, right? It's going to be very niche कि इस type की therapy ही लेनी है मुझे. So clearly the choices are more expansive on one side, the broader on one side, the more constricted on the other side. तो ये माइंडसेट जो है हमारा, जो बिहेवियर ड्राइव कर रहा है हमारा, इस माइंडसेट चेंज करने के बहुत फायदे हैं. और फायदे हैं ये हैं जो आप ही ने सजेस्ट किए हैं, are on the left. So acceptance and change go together, because the person on the left who thinks it's okay to stammer is making very different choices than the person on the right. This is what we are talking about over here. This is an acceptance mindset. I stutter, but I can speak. This is a more rejecting mindset. This is the person who's thinking it's not okay to stammer. This is the person who's thinking it's okay to stammer. And what we have basically done is, in this little exercise, we have explained what we think what it means. What were you saying, Vidya? No, I was just trying to, I mean, like, even the type of jobs that we do, that choices also changes when we think it is okay to stammer or not. Yeah. Thank you for saying that. I know you had made that point when we had met. So let's add another column here. Add one more row here. I have met a couple of IT programmers who told me that they wanted to do something else, but they went into IT thinking that it is safer to hide behind a computer monitor. Yeah, lots of people make that choice. Yeah, more likely to take occupations that require verbal communication, right? Yes. Less likely to take occupations. All of this goes together. More avoidant, less avoidant,
the kinds of choices we make about work and so on and so forth. More elective, more open here, all of those things. Okay, there's a part 2 of this, which is a related point, which I'm going to move to the next screen. This is a classic exercise that we can also do in a very similar way. When I tell people I stammer, ... It's the classic, इसको हम speech therapy में sentence starter exercise बुलाते हैं. Because it's very difficult to have a conversation, in general, have an open question कि आपको क्या लगता है, आपकी feelings क्या हैं, stammering बारे में क्या feelings हैं. Particularly अगर जब younger लोगों से ये सवाल पूछते हैं तो क्या मुझे नहीं पता, जो भी I don't feel good, or you don't get a good response. But when you have a sentence starter exercise where you have a prefix, when I stammer, I feel ... When I tell people that I stammer, I feel ... It's okay to stammer because ... It's not okay to stammer because ... And then you fill in the blanks. तो अपनी भावनाओं के बारे में, अपनी इमोशंस के बारे में बोलना थोड़ा आसान हो जाता है क्योंकि we have a cue, we have something to finish, we have a sentence that is started and we want to finish it. So if you look at it as a sentence starter exercise, I'll share it again with you. जब मैं लोगों को बताता हूं कि मैं हकलाता हूं, तब क्या होता है? कॉन्वर्सेशन में क्या होता है, शारीरिक रूप में क्या होता है, शरीर में जो प्रतिक्रिया हो रही है उसमें क्या होता है, और जब मैं छिपाता हूं अपनी हकलाहट, तब how do I feel in my body? How do I feel about the listener? How do I feel about communication? All those things. So if you want, we can have that conversation next. Very specifically about self-disclosure. And certainly we can do breakouts again, or we can just talk in the main session. So if anybody has anything to say on the left side or the right side, let me know. Yeah, Ajendra. Yeah. So in the left side, when I tell people I stammer, first thing, I feel very relaxed because I don't have any fear. I don't have any fear of judgment. Okay, good, excellent. I'm going to write your name next. And then on the right side, okay. Then on the right side, if I don't tell people that I stammer, means like I have a lot of feeling that if I stammer, like world will end. If I stammer, he will think very negative about me. All those kind of feelings. If I don't tell that I stammer. So basically, let's flip this. There is greater fear of judgment, more fear of judgment, feel less relaxed, more anxious. Okay. Yes. Okay. Okay. Let's keep going. What else? Nyai, would you like to contribute? Nyai. Yes. So in the left side, when I when I tell people that I is stammer, they are more nice to me, and yeah. And when I don't tell someone that I is stammer, they will they will be not so nice towards me, but they will make they will
they look very confused when I Mm. stammer in front of them. Yeah, very good. People look more confused, look confused, Yeah, confused. confused when I talk. They are Yes. very surprised because they don't expect Yeah, somehow. people look confused, surprised. Yeah, when I talk. Okay, good. Let's write your name next to it. Anybody else? Yeah, Manish. When I tell people that I stammer, I will not avoid my stammering. I will stammer when I will not so I will stammer happily. But I'll stammer happily. Okay, less avoidant. Yeah, yeah, less avoidant, but more when I avoidant. tell people that I am stammer, I avoid when I will try to avoid stammering. Yeah. Okay, great. एक जगह पे कम अवॉइडेंस है, एक जगह पे ज्यादा अवॉइडेंस है, right? So I try to get away from language that is either plus or minus. कि either I will not be avoidant at all or I will be always avoidant, because human beings are complicated. Sometimes we are, this is all in a gray area. So I like to think of it as less avoidant, more avoidant, more judgment, less judgment, because it's all on a scale. It's all on a continuum. Dr. Vijay, आप क्या बोलने वाले थे? When I tell people as a stammer, so there is like less anxiety, less fear is there. And एक मिनट, on आपने the क्या? I right didn't hear this side, last part. it's more anxiety, more fear on the right side. But Yeah. I have my different opinion about that. That there is like a less anxiety, but there is a fear of opinion building about me. That they will build some sort of opinion that is stammerer, and I may lose some sort of opportunity. You lose an opportunity. Explain that a little bit more. May lose some opportunity. So there is fear in the mind that in the one side, so there is reduction in the anxiety, but simultaneously there is fear that I may lose some opportunity. Yeah, suppose I will like openly tell that stammering may come, then they will think that he should not be in that space of some sort of opportunity. So there is, the shadow of fear is also there. Okay. Your voice is not clear, Dr. Yeah. Vijay. I'm having trouble Voice is understanding. less. हाँ, आपकी आवाज ठीक से साफ नहीं आ रही. एक हाँ, मैं एक बार audible हूँ? हाँ, now you're audible. हाँ, तो इससे आवाज नहीं आ रही थी. हाँ जी. When I tell people as I stammer, Yeah. so there is like less anxiety, less fear is there. That is on the left hand side. Right hand side, more anxiety, more fear. So that's true that we have learned. But there is considerable reduction in the fear and anxiety. So when I tell the people, but there is shadow of fear that the people or the society will build some sort of opinion about me that he is stammerer, and I may lose some sort of opportunities. There is like shadow of fear is that if I'm going to declare this, then I may lose some opportunity. Such sort of fear is there in the mind, because mind is complex. Yeah, definitely.
Absolutely. Thank you for saying that. I don't want this to be all roses on one side and all thorns on the other side because this is all very complicated choices. So absolutely, आपने आपने बहुत जायज बात की कि there is a sense of um, uh, there may be judgment both ways, right? Even if I tell you, if you didn't know that I'm a person who stammered and you are not a person who stammers, there might be a judgment. If I say to you that I'm a person who stammers, if I voluntarily stammer before you the first time you meet, you may still judge me for something, right? You may still think that this person has some weird thing going on. So regardless of whether I say or not, it could be an awkward moment. Awkwardness जो है वो हर सिचुएशन में हो सकती है, चाहे मैं बताऊं चाहे मैं ना बताऊं, देयर कैन बी अ लेवल ऑफ ऑकवर्डनेस. Yes. प्रॉब्लम ये है कि ऑकवर्डनेस जो है, दिस इज वेयर आई फील, ऑकवर्डनेस जो है इनिशियल ऑकवर्डनेस होगी अगर मैं आपको नहीं बताऊं, लेकिन एक बार मैंने बता दिया तो ऑकवर्डनेस थोड़ी सी होगी, लेकिन उसके बाद आई विल डील विद इट. लेकिन जो ऑकवर्डनेस जो होगी जब मैं आपको नहीं बताऊंगा और जब मैं हकलाने लगूंगा तो awkwardness will last for a very long time because now something odd has happened in this conversation and you don't know how to deal with it, the other listener doesn't know how to deal with it, we don't know how to deal with this कि क्या हो रहा है यहाँ पे. तो awkwardness जो है ज्यादा लंबी होगी एक साइड पे. awkwardness जो है इनिशियल होगी, बिगिनिंग में awkwardness होगी जब मैं बताऊंगा आपको, लेकिन उसके बाद जो है we'll be able to carry on a more normal exchange, right? Okay. Okay. I'm just going to write that down a little bit. Just so let me share screen. Oh, I'm sharing screen now. Let me do that. Right? Something like that. एक साइड पे awkwardness है, दूसरी साइड में भी awkwardness है, लेकिन there is an initial awkwardness. There's a lot more awkwardness on the other side. Okay. Where do you think I'm more likely to resist time pressure? अगर मुझको टाइम प्रेशर रेजिस्ट करना है, थोड़ा टाइम लगाना है बोलने के लिए, there are many ways to resist time pressure. And I think learning to resist time pressure is a big skill that we can learn. There are many different ways of resisting time pressure. And the left one. On Your the left part. Left one. Yeah. So, okay, so let me write that down. Here there is increased time pressure in my mind. Okay. और कुछ? Any other points? We can also get an opportunity to talk about stammering. Yeah, great point. Yeah. Fantastic. Creates opportunity to talk about stammering. Potential moment for self-advocacy, education, right? Educating the listener. Maybe invite the listener to share their vulnerability.
Obviously, if I don't tell people that I stammer and I'm trying to hide my stammer, I'm trying to pass off as fluent, all of that is not true on the right because basically I'm trying to hide it. Dr. Vijay? Sir, I want to add one point in that. If I Ji. will tell the people that I stammer, then I become a more kind person and generous person. I'm very kind person. If I will, so if I will tell or disclose the thing, I'm a very kind person. And if I will hide it, then I will be like angry type of person. Like more hatred is there. That I mean, suppose someone is fluent speaker and who is fluently speaking with me, then I don't like that how he can fluently speak. So there is hatred in the mind. So it's better to tell the person that I stammer sometimes. Great point. Okay, great. Thank you. I retain my resentment. I'm just going to restate what you're saying because I just want to write something here quickly. I retain my resentment and anger about stammering. Yeah. Okay. Okay. अरहम, तुम कुछ आप कुछ बोलना चाहते थे? जी सर, जब हम किसी को सामने से खुद ही बता देते हैं कि मुझे बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम है, मैं हकलाता हूँ, तो उसके बाद टेक्निक्स यूज करना भी काफी इजी हो जाता है। वरना अगर जब तक हम किसी को बताते नहीं है तो बहुत टेक्निक्स यूज करना बहुत मुश्किल होता है जब तक। Yeah, good point. Excellent point. Excellent point. अभी आप मुझसे बोल रहे थे तो वॉलंटरी स्टैमरिंग कर रहे थे थोड़ी सी? नहीं सर, ये थोड़ी ये वॉलेंटरी कम थी, नेचुरल ज्यादा थी। नेचुरल ज्यादा थी। अच्छा, ठीक है। तो तो थोड़ा सा वॉलंटरी स्टैमरिंग करके थोड़ा बोले हैं हम, आप और हम। जी सर, ऑफ कोर्स। थोड़ी सी बात कर लेते हैं, थोड़ी वॉलंटरी स्टैमरिंग करने से, थोड़ी सी लाइट वॉलंटरी स्टैमरिंग। तो हर 2-3 शब्दों के बाद जैसे मैं कह रहा हूं अपने लिहाज से, जो आपको ठीक लगे, जो आपको कॉन्फिडेंट कंफर्टेबल लगे, तो थोड़ी सी स्टैमरिंग वॉलंटरीली अपने स्पीच में डाल दीजिए। तो जब अभी जो बताया मुझको, वो थोड़ी से फिर से बताइए, थोड़ी सी वॉलंटरी स्टैमरिंग करके, फुल आई कांटेक्ट के साथ। जी सर, मेरा पॉइंट था कि जब हम किसी को सामने से बता देते हैं तो हम काफी रिलैक्स हो जाते हैं और टेक्निक्स भी इजीली यूज कर पाते हैं। जब तक हम सामने से खुलकर बताते नहीं है कि हम हकलाते हैं, तो जब तक होता है कि हम फटाफट अपनी बात खत्म करके चले जाएं। और या फिर एक थॉट ये भी होता है कि अगर हकलाएं हुए तो बहुत ज्यादा ना हकलाएं, बिल्कुल ब्लॉक में ना चले जाएं। ये मैं मेरे साथ होता है। मैं चाहता हूँ कि अगर मैं मतलब कि अगर हकलाऊं भी तो बिल्कुल ब्लॉक में ना चला जाऊं, एटलीस्ट अपनी बात कंप्लीट कर लूं। तो जब तक अगर हम किसी को पहले से ही बता देंगे सामने से, तो फिर हम हमारे ये सारे जो भी थॉट्स हैं वो नहीं आएंगे और हम अपनी बात आसानी से रख पाएंगे। क्या बात की, एक्सलेंट, थैंक यू। और बहुत शानदार वॉलंटरी स्टैमरिंग की आपने, बहुत बहुत शानदार वॉलंटरी स्टैमरिंग की। दो तीन बार इस हफ्ते और कीजिए, और लोगों के साथ कीजिए। जब जैसे आपने बोला था पिछली बार जब हम सैटरडे को मिले थे कि आपके बहनों के साथ और आपकी अम्मी के साथ आपको ठीक लगता है वॉलंटरी स्टैमरिंग, उनके साथ और वॉलंटरी स्टैमरिंग कीजिए। किया था पिछले हफ्ते आपने?
यस सर, जैसे ही हमारी में मीटिंग खत्म हुई थी, उसके बाद हाँ। मैंने फौरन सबके साथ यूज करा अपनी फैमिली में। और सबसे मैंने पूछा भी, अगर मैं ऐसा अगर ऐसा कुछ करूं तो कुछ एबनॉर्मल तो नहीं ल, ल, लगेगा। तो उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल ठीक है। अब अगर कहीं पे अटक रहे हो तो बाद में उसको करेक्ट कर लो कैंसिलेशन की मदद से। तो मैंने कहा अभी भी हर दिन थोड़ा थोड़ा कैंसिलेशन पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ उनके साथ। बहुत बहुत बढ़िया। गुड न्यूज। वेरी गुड न्यूज। कीप डूइंग इट। कीप डूइंग इट। कीप डूइंग इट। और अगर थोड़ा सा आपको और एडवेंचर की जरूरत है अगर और एडवेंचर अगर आपको चाहिए तो आप अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर निकलिए। अब थोड़ा थोड़ा सा अगर एक दो हफ्ते ये फिर से रिपीट करनी है एक्सरसाइज, कीप डूइंग इट, लेकिन ओवर टाइम थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से और बाहर निकलिए। किसी और के साथ भी कीजिए। अपने फैमिली मेंबर के साथ ही कीजिए, लेकिन जिनके साथ कम कंफर्टेबल उनके साथ कीजिए। उनको भी बता के कीजिए। गुड। एक्सलेंट। और तीसरा, टेलीग्राम ग्रुप में ऑलरेडी पाकिस्तान से 2-3 लोग और भी हैं। आप उनके साथ में हम्म। फोन पे भी बात कर सकते हैं। याद रखिएगा, पाकिस्तान से भी 2-3 लोग अभी ज्वाइन किए हैं अभी हाल में। हम्म। अगर आप मैसेज डालेंगे उसमें ना कि एनीबडी फ्रॉम पाकिस्तान, यू विल गेट सम रेस्पॉन्सेस। हम्म। तो किस 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 जगह में रह रहे हैं आप पाकिस्तान में? सर मैं कराची में रह रहा हूँ। लवली। वेरी नाइस। ठीक है। और कोई, एनीबडी एल्स वांट्स टू से एनीथिंग अबाउट दिस, कि और लाइक व्हाट एल्स हैपेंस? आई थिंक वी हैव Yeah, ओवर। Manish. आई थिंक Let's take one from Manish. One last one from Manish. Go ahead, मैं एक Manish. छोटा सा एग्जांपल दे सकता हूँ जो आज का टॉपिक था जी। उसके जी। ऊपर। अ, इस, इसको मैं एक स्टोरी के रूप में, 2 मिनट की स्टोरी के रूप में बता देता हूँ ठीक है। कि दो ब्रदर्स थे। वो ऑफिस जा रहे थे। गलती से उन्होंने एक शूज एक्सचेंज एक एक शूज एक्सचेंज हो गए। तो हम्म। जैसे ही बड़ा भाई ऑफिस गया तो उसने देखा एक शूज ब्लैक है और दूसरा शूज ब्राउन है। हम्म। तो उसमें थोड़ा काफी अचरज हुआ कि आज काफी बड़ी गलती हो गई। तो और हम्म। उस दिन वो पूरे दिन परेशान रहा और अपनी मीटिंग्स भी उसने सभी कैंसिल कर दी कि सभी क्या सोचेंगे। फिर जो छोटा भाई था वो भी जल्दी जल्दी में शूज पहन कर चला गया। वहां उसने देखा कि आज ये गलती से मैंने अलग अलग कलर के शूज पहन लिए। लेकिन उसने जो प्री डिसाइडेड मीटिंग्स थी वो उसने उसी जोश के साथ, होश के साथ की। तो काफी हम्म। लोग आए, उन्होंने देखा, तो उन्होंने सोचा कि शायद ये कोई नया स्टाइल है, नया फैशन है। और उन्होंने उसको अप्रिसिएट भी किया जब उन्होंने हाँ। बताया कि गलती से है। तो उसने जब जो बड़ा भाई था वो पूरे दिन टेंशन में रहा और परेशानी में रहा। उसने अपनी मीटिंग्स और दिन को एंजॉय नहीं किया। जबकि छोटे भाई ने अच्छे से मीटिंग्स की, पूरा आउटपुट लिया। तो इसी हम्म। को हम व्हेन आई टेल पीपल दैट स्टैमर और डोंट स्टैमर, इस तरीके हम्म। से इस एग्जाम्पल को ले सकते हैं। थैंक यू, काफी थैंक अच्छी एग्जाम्पल है आपकी। थैंक यू। बहुत बहुत अच्छी एग्जाम्पल है। जैसे आपने पिछली बार कैंसलेशन में एग्जाम्पल थी कि जो जो अगर कोई क्रिकेट बैट मारता है तो अगर बॉल नहीं आती तो फिर से मार करके दिखाता है। वो भी अच्छी एग्जाम्पल थी। यू। एक्सीलेंट। थैंक यू। वेरी वेरी नाइस। सो आई एम गोइंग टू राइट दिस। तो मैं लिखूंगा इसके बारे में। एक तो अरम ने बोला था, अभी जस्ट शेयर स्क्रीन अगेन विद यू, कि एक तो है कि
यूजिंग टेक्निक्स थोड़ा सा आसान हो जाता है, यूजिंग टेक्निक्स इज चैलेंजिंग। और दूसरी बात जो मनीष ने अभी बोली थी, ये है कि लेस कंसर्न्ड अबाउट पीपल्स ओपिनियंस, कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, इस चीज का जो है मुझे डर जो है थोड़ा कम है यहाँ पे। यहाँ पे आई एम, ऑब्वियसली मैं चुप पा रहा हूँ, सो आई एम कंसर्न्ड अबाउट पीपल्स ओपिनियंस। ओके, so this is really, I wanted to do this in the TISA group here today because I think ये हमारी reflexive choices हैं, ये हमारे reflexive impulse जो है कि हम जो भी स्टिग्मा जो सोसाइटी में है स्टैमरिंग के बारे में, वो हम internalize किया हुआ है हमने। That's why a lot of us also feel that it's not okay to stammer. We try to hide our stammer. Obviously, there are consequences of stammering, and we have all faced those consequences because of which we feel this way. Um, and there is also, uh, but obviously we have a choice about making the choice, but we don't have a choice about consequences. So we can choose a certain behavior, but we can't choose the consequences of that behavior, right? So in the same way, if you make a different choice, अगर हम थोड़ा सा एक्सेप्टेंस माइंडसेट से चलें तो हमारी चॉइसेस ज्यादा एक्सपैंड हो जाएंगी। दिस इज अ वे ऑफ रिफ्लेक्टिंग ऑन लाइक व्हाट इज गोइंग ऑन हियर, व्हाट इज गोइंग ऑन व्हेन वी थिंक इट्स ओके टू स्टैमर, व्हेन वी थिंक इट्स नॉट ओके टू स्टैमर। अगर लोगों को बताते हैं तो उसकी क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, नहीं बताते उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। दीज आर ऑल्सो चॉइसेस दैट विल बी मेड। सो ये चीजें जो हैं, अवॉइडेंस जो हैं, लोग स्टैमरिंग को छिपाना, लोगों को नहीं बताना, ये सब कुछ सीखा हुआ है, बट दिस has become second nature. It's become a reflexive behavior in the body. So it takes a little exercise like this. Simple सी exercise है, left side of the ledger, right side of the ledger. लेकिन ग्रुप में एक्सरसाइज किए हैं हम, एंड क्लियरली वी कैन सी इन बोथ सिचुएशंस कि हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है, अगर एक मेंटालिटी लेंगे तो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ एक टाइप की होगी, और अगर दूसरी मेंटालिटी लेंगे तो क्वालिटी ऑफ लाइफ दूसरे टाइप की होगी। Now we are not happy with the quality of life. This is why we are here. इसीलिए हमने टीसा ज्वाइन किया, इसलिए हमने टीओपीजी ज्वाइन किया। हम चेंज मांगते हैं, हम बदलाव मांगते हैं। तो बदलाव का सिस्टम यही है कि हम समझें कि हमारा रिफ्लेक्सिव बिहेवियर क्या है, इंस्टिंक्टिव बिहेवियर क्या है, रिफ्लेक्सिव को थोड़ा सा रिफ्लेक्टिव बनाएं, इंस्टिंक्टिव को थोड़ा इंट्रोस्पेक्टिव बनाएं, राइट। यू कैन यूज द सेम अलिटरेशन कि जो हमारा इंस्टिंक्टिव बिहेवियर है, इंस्टिंक्चुअल बिहेवियर है, उसको इंट्रोस्पेक्ट कैसे करें, थोड़ा थोड़ा सा। जो इम्पल्सिव बिहेवियर है, हाउ डू वी टर्न इट इनटू मोर इंटेंशनल बिहेवियर। दैट इज ऑल्सो टू वर्ड्स वी कैन यूज, impulsive versus intentional, instinctive versus introspective, reflexive versus reflective. तो ये जो सारी जो एक्सरसाइजेज हमने की हैं, दिस इज मेकिंग अस अवेयर कि हमारे पास चॉइसेस हैं, बहुत चॉइसेस हैं। जो जो जैसे हम अब तक जिंदगी चल रही है, उसको अगर चेंज करना है तो चेंज में बहुत प्रॉमिस है। वी कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स when we shift our mindset. I'm going to leave it there, guys. It's an hour and 48 minutes, so I'm going to quit. But I'll try to see you on Saturday as well. So that's the plan anyway. And we'll Yeah, have some thank more you. about this. और आप लोग जितना जितना आपका जो टास्क है, को टास्क हैं, टीओपीजी के टास्क हैं, वो करते रहिए। माय रिकमेंडेशन वुड बी कि अगर आप थोड़ी सी वॉलंटरी स्टैमरिंग अपने स्पीच में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं डेली बेसिस पे, it will only make you move in the direction that we are talking about.
being less anxious, more open, approaching the behavior, all of those things. It will only help with that kind of thing. जैसे कि अरहम ने कर रहा है वो वो डेली वॉलंटरी स्टैमरिंग की प्रैक्टिस कर रहा है अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ. तो let's make a plan that we will do something similar as well. All right, guys. I will see you on Saturday. Bye. Big thanks from all Yeah, of us. bye. Yeah. Thanks. Welcome. Namaskar. Bye. Good Yeah, night. thank you all. Good night. I'll just take a quick feedback from Nyai. Nyai, what have you understood today? Can you summarize what you have understood today? Nyai. Yeah. So I really liked the way. So I really like the concept that he taught us how about what happens if we accept our stammering, and what happens if we don't accept our stammering. Yeah, so he really helped me in seeing stammering in a new way, in a positive way. Yeah. Very good, Nyai. So now you should talk more often with your Yes, friends. I will. Yes, I will. Phone your relatives, phone your family, phone your friends every day, and talk to them. More you talk, better you will become. Right? Thank you so much, everyone. Thank you so much, Dr. Vijay. Thanks a lot, Gajendra. Yeah, thank you. Thank you so Yeah. much. Arham, thank you so Thank you, much. sir. Okay. Okay. Okay, sir.